Calculate the FV. Calculate FV. Future value of 100. Earning 100 earning 10% per annum compounded every 2 years after 6 years. Calculate FV of 100 earning 10% per annum compounded every 2 years. इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि ये स्टेटेड रेट है या नहीं है. Is this the stated rate or is this the effective rate? Is this the stated rate or is this the effective rate? Anyone wants to take a guess? Is this the stated rate or effective? आप क्या बोलते हो? Every 2 years. After 6 years. You're a little confused. ठीक है. This is actually a confusing one only. And I've purposely given this. This is actually a stated rate. Stated rate. Now, how do you identify this as a stated rate? For effective rates, this per annum and compounding annually. So per annum compounding annually, ये same होता है हमेशा. It is per quarter compounded quarterly. It is per month compounded monthly. It is per semi-annually compounded half-yearly. But this is per annum compounded every 2 years. So this is not the same. This means it is the stated rate. Now the question is, how do you calculate the effective rate? How do you calculate the every 2 years में आपका the meaning of this is every 2 years में आपको interest मिलेगा. ठीक है? Every 2 years में आपको interest मिलेगा. The simple meaning of this is question is this. Okay. So this is saying 10% per annum compounded 2 years. तो 2 साल में आपको कितना interest मिलेगा? 10 into 2. सेमी एनुअल में 5 होता है. आप क्या करते हो? हाँ, ठीक है. सेमी एनुअल में 5 होता है. No, now you need to make it effective. Oh, the only way to make this effective is that you have to convert it into this per 2 year compounded 2 yearly. Don't worry, this kind of a question never comes in the exam. 2 साल का they are saying 10% नहीं, they are saying 1 साल का ही 10%, but it will get compounded every 2 years. ठीक है? जैसे if I write 12% per annum compounded. So what does this mean? This means 12 per, but this will be 10% per month. Sorry, 1%. 1% per month. 1% per day. This was the stated. And this is the effective. Right? This is the effective. This was stated, this is effective. So effective mein per this and this is consistent. And how do you make it consistent? You always make it consistent to the compounding frequency. So what is the compounding frequency here? Compounding frequency is every 2 years. Every 2 years है compounding frequency. तो आपको इसको consistent बनाना होगा. Per annum को आपको every 2 years से consistent बनाना होगा. Which is why you multiply it by 2. Clear? You always make this per consistent to this, which is why you multiply it with 2. ठीक है? Now I'm writing it nicely so that you can copy it. So for this question also, okay, we will come to that. This is this. I by Y is interest rate per compounding period slash effective rate equal to 10 into 2 equal to 20% per 2 year compounded every 2 years. ठीक है? Now what is N?
n is number of compounding periods. So 6 साल में कितना बार compounding होगा इसमें? How many years, how many times will your money get compounded? 3 times, correct. So n becomes 3. N becomes 3. Now you understand मैं starting से compounding, number of compounding periods, every compounded में क्यों stress डाल रहा हूँ? You need to make it very clear कि कितना बार compounding होगा, कितना % से compounding होगा. Clear? So what is the FV? FV is equal to 100 into 1 plus 20% to the power. कैसे लिखा मैंने? PV into 1 plus I by Y to the power n. Right? This comes out to be 1.2 to the power 3 into 100, which is doing the same thing with TVM function. Second clear TVM, 100 negative PV, 20 I by Y, 3N CPT FV. Same answer? मतलब it depends. बहुत जन को formula इतना सारा, because by the end of the curriculum you would have a lot of formulae to remember. So many people prefer to leave whatever formula you want to, you can ignore. उसके वजह से TVM काम आ जाता है, and annuity में आपको TVM बहुत काम आएगा. Because इसका फॉर्मूला तो कंपाउंड इंटरेस्ट का many people remember it as it is. ठीक है? Annuity का फॉर्मूला people forget. They don't remember it, but you can use the TVM function to calculate PV of annuity also. वो मैं आपको सिखाऊंगा annuity जब कराऊंगा तब. ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर? ये वाला क्वेश्चन और आंसर आप कॉपी कर लीजिए. इससे ये क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलता है. द ओनली पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू गिव यू conceptual clarity. There is no other purpose for this question. 10 into 2 is 20% for 2 years compounded every 2 years. जैसे पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिखते हैं, सिमिलर वे में इफेक्टिव लैंग्वेज. करेक्ट. डोंट स्किप राइटिंग ऑल दिस, बिकॉज ये लिखने से ना आपको आदत पड़ जाएगी. यू विल गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज. आई मेक यू गाइस राइट दिस पर्पसली. मतलब मैं आपको नोट भी दे ही सकता हूँ, मैं खुद लिख ही रहा हूँ सब कुछ. सो दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन, this section as well. Stated and effective and stated and effective का wording. Okay. Now we will come to a part, effective rate conversion वाला part में आते हैं. ठीक है, ये heading डालना, computing effective rates. Computing effective rates. And write down the question. Calculate the effective annual rate if a person is earning 12% compounded annually. Calculate the effective annual rate if a person is earning 12% compounded monthly. Sorry, मैंने गलत लिख दिया. 12% compounded annually तो effective rate ही हो जाता. Compounded monthly. So what is the question asking you? अभी आपका rate जो person earn कर रहा है, that is answer right now. What the individual is earning, it is 12% per annum. 12% per annum compounded monthly. Is this the effective rate or the stated rate? This is what? बताइए फटाफट. This is stated only. Per annum and compounded monthly is not going together. That means no, they have mentioned effective annual rate. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ confusion होगा.
This is the stated rate. You mentioned it correctly. ठीक है? हाँ, it is correct only. This is the stated rate. Now, or I can say it is 1% per month compounded monthly. What is this now? This is effective annual rate or effective monthly rate? This is effective monthly rate. What is the question asking you? नहीं, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आप वापस स्टेटेड रेट में पहुंच जाओगे. This is not what the question is asking you. The question is asking you effective annual rate. ठीक है? Here's what the question is saying. आप एक equivalent rate निकालो. Find out an equivalent rate which is equivalent to 1% compounding monthly for a year. So what it effectively means? मैं बताता हूँ. हाँ, correct. वही होगा. You're correct. So what it is saying कि right now if I have invested 1 rupee for 1 year at 12%, मेरा FV क्या हो जाएगा? Future value will be 1 plus 1% to the power 12. 0 पे 1 रुपया डाला, 1 year पे मुझे कितना मिलेगा? इतना मिलेगा, right? Bear with me. Future value यही होगा. Yes. Present value 1 plus 1 into 8 or According to this, right? This will be your future value. Now the question is asking, let us assume X% per annum compounded annually, which will give me the same value after 1 year. That means I know this is the value I want to get, but now instead of compounding it monthly, I will compound it annually. ये 1 वापस इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, but now my 1 will earn X% for 1 year. I want the same future value, but I want an interest rate that gives me the same future value, but I only compound it once a year. Effective annual rate क्या होता है? Effective annual rate is X% per annum compounded annually. So what will be my equivalent? कॉपी मत करना अभी. हाँ, मैं अच्छे से कराऊंगा आपको. What will be my equivalent rate for 1% compounding monthly? इसका बेसिक मतलब यही है आपका कि आपको ये ये 1% compounded per month compounded monthly को convert करना है to X% per annum compounded annually, so that your future value stays intact. So can I write this as 1 plus 1 plus X% to the power 1 is equal to 1 into 1 plus 1% to the power 12. And now can I find X? Got it? Correct. ये वाला is the yearly and ये है monthly. तो effectively annual rate अगर मैं charge करता customer से, suppose now think from a bank's perspective. Now bank is saying, I'm giving you a loan, I want 1% per month interest from you. वो बंदा बोला मैं तो आपको annually interest दूंगा. I can't do this monthly calculation. It does not go into my head. Now bank has to calculate an equivalent rate that he should charge the customer on an annual basis. So this X% is that equivalent rate, right? A customer comes to the bank says, I want 1% compounded monthly. Customer says, I don't want so much of mathapachi. He goes and says, give me 1 single rate compounded annually because I only do annual calculations. So bank is now calculating what should he charge annually, which gives him the same return as 1% monthly, right?
सेम क्लियर। अब ये x को निकालते हैं। x इज नथिंग बट, ये 1 की जगह 100 होता, कुछ भी होता, x सेम ही आता। ठीक है, सो आई एम इग्नोरिंग दिस 1। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1% टू द पावर 12 minus 1. Let's do it on the calculator. Calculator में where do we always start? We always start with whatever is within the bracket. So to the power 1 क्या होगा? 1 x ही रहेगा, into 1 क्या होगा? 1 plus x ही रहेगा। 1 into 1 plus x percent to the power 1. Can I write it as simply 1 plus x percent? तो अब मैं x percent को यहाँ रखा और -1 उधर ले आया। Got it? Sure. तो अभी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। 1.01 to the power 12 to the power 12 to -1। ठीक है, सो इसका आंसर आया x% इज इक्वल टू 12.68। ठीक है, क्लियर क्लियर। So we will have to take the answer in percentage only, 12.68%. आपको क्वेश्चन में डेसिमल में भी दे सकता है आंसर, आपको टिक करना है खाली, राइट। तो वो ये भी दे सकता है 0.1268 1268 भी देगा, बट हर सारा डेसिमल में होगा। मतलब आपका सारा ऑप्शन या तो डेसिमल्स में होगा या सारा ऑप्शन परसेंटेज में होगा। यूजुअल में परसेंटेज ही होता है। ठीक है, तो अगर डेसिमल में हुआ तो आपको 0.1268 को टिक करना है, अगर परसेंट में हुआ तो 12.68 को टिक करना है। ठीक है, क्लियर। सो नाउ आपने ये क्वेश्चन कॉपी किया, क्वेश्चन मैंने डिक्टेट किया था ना, आपने ये कॉपी कर लिया था, राइट। अब आंसर, हाँ आंसर कॉपी नहीं किया, करेक्ट। सो आंसर में फर्स्ट कॉपी दिस टू। ठीक है, ये दो कॉपी करिए। बस 2 लाइन कॉपी किया कि उसके बाद का भी किया कुछ। नाउ इधर लिखना, क्वेश्चन इज आस्किंग अस x% per annum. Please write, question is asking us x% per annum compounded annually. That is the effective annual rate. Question is asking us x% per annum compounded annually. That is the effective annual rate. अब आंसर में लिखना, this is the understanding of the question. Okay, what is the question asking? Now write the answer. Answer, let us assume we earn x%. Let us assume we earn x% per annum compounded annually, which will give us the same future value, as 1% per month compounded monthly, same future value as 1% per month compounded monthly. Then write side by side, I'm making two graphs, 0, 1, 0, 1. Effective monthly, effective annual. 1 rupee become 1% to the power 1 at year 1.
Over here, 1 rupee becomes 1 plus X%, 1 plus X% to the power, ये 12 होगा, to the power 1. It should give us the same future value as we've written above. It should give the same future value as we have written above. Thus, 1 into 1 plus 1% to the power 12 is equal to 1 into 1 plus X% to the power 1. Find X. हाँ, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नोट लिखवा रहा हूँ, जस्ट इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म. जैसे भी आपका रिकॉल वैल्यू हो, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है, तो बाद में आप पढ़ोगे एक बार में आपको समझ आ जाएगा. एंड मैं नोट्स भी जो लिखा रहा हूँ सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा रहा हूँ. एग्जैक्टली हाउ योर एग्जाम इज गोइंग टू अपीयर लाइक. मतलब जो थियोरी नोट्स है वो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा और बुक में भी आपको मिल जाएगा वो तो. मतलब डेटा क्लीनिंग के लिए करना पड़ता है बहुत चीज में. बेसिकली दो बॉन्ड हो सकते हैं. देयर कैन बी टू बॉन्ड्स. वन इज बोथ आर triple A rated bonds. One is accruing interest on compounded annual basis. One is accruing interest on compounded half yearly basis. If both the bonds do not have the same effective annual rate, that means one is overvalued or undervalued compared to the other. ठीक है. So there is an arbitrage opportunity that you can gain there. उस वजह से you have to do it for data cleaning, understanding की क्या market rate ये सब चल रहा है वो सब के लिए. ठीक है. Usually what happens is that जितना भी risk free yield curves आपको मिलते हैं, CCIL, FIMDA, all those are effective semi-annual rates. Those are never annual rates. आपने कभी देखा होगा, आई डोंट नो ऑप्शन प्राइसिंग ये सब में आप लोग रिस्क फ्री रेट यूज करते हो कि नहीं ट्रेडिंग के समय, बट आप बाद में पढ़ोगे ऑप्शन प्राइसिंग में रिस्क फ्री रेट यूज आएगा टू प्राइस टू वैल्यू एन ऑप्शन. The risk free rates stated are always effective semi-annual rates. हाँ, sorry, stated semi-annual rates में वो आपको दिया हुआ रहता है. You have to convert it to effective semi-annual rates. It is never compounded annually, which is given. So for all practical purposes, your working is going to be on annual rates only. So you have to convert those semi-annual rates to annual rates all the time, every time. I have no idea वो semi-annual rates में क्यों देते हैं, but it is always semi-annual rates. ठीक है. ये वाला कॉपी कर लो. सम सॉरी, हाँ ये भी आप कर लो. यू कैन सॉल्व फाइंड एक्स में, दिस इज फाइंडिंग एक्स में. ब्लूमबर्ग ये सबसे भी जो भी रेट मिलता है, ऑल दोस रेट्स आर ऑल सेमी एनुअल रेट्स. स्टेटेड सेमी एनुअल रेट्स. क्लियर. नाउ आई हैव written this compounded monthly to annual conversion. ठीक है. सो इफेक्टिव एनुअल रेट अभी अपने यही निकाले थे. दिस आई हैव ऑलरेडी रिटन इट हियर. ठीक है. अब सेम थिंग फॉर we will do one more question actually. वो कर लेता हूँ फिर आपको ये बताता हूँ. राइट, एक और क्वेश्चन. Calculate the effective quarterly rate if a person is earning same 12% per annum compounded monthly. Okay, so let's start with understanding of what the question is asking us.
12% per annum compound. Huh? Correct. The same thing which we did. Compounded monthly. This is what? This is your stated rate. 1% per month compounded monthly. This is your effective monthly rate. What has changed from the previous question? We are, instead of effective annual rate, we want effective quarterly rate. Okay. We want what? We want effective quarterly rate. So let's assume X% per quarter compounded quarterly effective. Now, how do we create equation of value? How do we create the equation? I'm creating again 0, 0.25, 0, 0.25. Okay, 0.25, 0.25. Now, if I had invested 1 rupee here, okay, at a monthly rate of 1% per annum, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं. तो मुझे 1% और 3 months मेरा वैल्यू ये हो जाता at 3 months. At the end of 3 months ये वैल्यू होता 0.25. Whenever we create timelines, we create in years. 1 year, right? So what is 1 quarter? 0.25. What is the future value at the end of first quarter? This is the future value, right? This is the future value. Clear? एक बार देख लो अच्छे से. FV is equal to PV into 1 plus I by Y to the power N. I by Y is effective rate, which is 1%. PV was 1. What was N? Number of periods. Number of periods in 1 quarter is, number of months in 1 quarter is 3, which is why I've written it as 3. Now I should get the same PV over here also. So 1 becomes quarterly rate pe 1 plus I by Y quarterly. Sorry, 1 plus X%. How many periods are in 1 quarter? Quarterly compounding में? हाँ? How many periods हुआ? अगर quarterly में compounding कर रहा हूँ, एक क्वार्टर में कितना पीरियड हुआ? क्वार्टरली कंपाउंडिंग में एक ही पीरियड हुआ ना? एक ही पीरियड हुआ. मैं X% ले रहा हूँ, which is what? Compounded quarterly. This 1% was compounded monthly, इसलिए 3 पीरियड लिखे थे ऊपर, राइट? ये एक ही पीरियड हुआ. तो इसका कैलकुलेशन क्या हुआ? नाउ these two should be equal. These two should be equal. So can I write 1 into 1 plus 1% to the power 3 is equal to 1 into 1 plus X% to the power 1? Or X% is equal to 1 plus 1% to the power 3 by 3 by pi नहीं होगा, -1. Connect with me? Done? Let's do it on the calculator. 1.01, which is 1 plus 1% to the power 3 equal to minus 1, which is 3.03. 3.03% per quarter compounded quarterly. ये पूरा लिखना, per quarter compounded quarterly. Do this. Now I will give you one more question, and this is the last question for today. Calculate the effective semi-annual rate if a person is earning 12% per annum compounded annually.
कंपाउंडेड एनुअली। सेम मेथड से जाते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या दिया है? 12% पर एनम कंपाउंडेड annually. Is this the effective rate, stated rate? Stated and effective both, क्योंकि पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ही है यहाँ, तो इस केस में क्या होता है? स्टेटेड और इफेक्टिव सेम है। एक्चुअली ये इफेक्टिव ही लिख लो आप, उसको स्टेटेड लिखो ही मत, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। This is what? This is the effective annual rate that they have given. What have they asked us? Annual rate. So what do we need? We need X% for half year, compounded half yearly. Right? With me? This is the effective annual rate. समझा आपने? हमें क्या पता है? 1 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ, इधर जाके 1 + 12% टू द पावर 1 बन जाएगा। FV is equal to PV into 1 + I/Y to the power 1। और ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो 1 रुपया X% पे इन्वेस्ट करोगे तो इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी अर्निंग X% इंटरेस्ट टू द पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स आर 2 हियर। In 1 year there are 2 half years. In 1 year there are 2 half years, right? And now what we need to do is equate these two. Now what do we need to do is equate these two and find X. इसको ये लिख सकता हूं ना मैं, टू द पावर हाफ। स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, X% 1 + 12% टू द पावर हाफ -1। Any questions? Any question? Online भी अगर कोई को क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लेना। Down then also please stop me. Going to the calculator. कॉपी कर लिया यहाँ तक। 1.12 स्क्वायर रूट, राइट? तो अगेन टू द पावर 0.5 करेंगे, इसलिए मैंने टू द पावर हाफ लिखा था स्क्वायर रूट का साइन हटा के, कैलकुलेटर में करना आ जाए। -1, दिस विल बी द आंसर, 5.83%। After I'm just writing it as 0.5. Okay. So what do we always start with? What is within the bracket? So 1 + 1% is nothing but 1.12. Then we press to the power what? To the power 0.5 -1 करना। क्या? -1 you get 0.0583 or 0.82%, 83%। clear? So this was, मैंने आपको नीचे से ऊपर कन्वर्जन भी सिखा दिया, from a lower to upper and from an upper to lower. Lower to upper means monthly to quarterly or monthly to, you can do it, and annual to quarterly, semi-annual or monthly also you can do it. ठीक है? You can extrapolate it to all the scenarios if you want to get a formula out of it. अभी मैं एक formula लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है? This is for you to become fast in the exam, nothing else. ठीक है? This is the formula where XA is the rate you want to find and XB is the effective rate that you have. ठीक है? Applying it to the question we were doing, ठीक है? Applying this to the question we were doing, A and B are compounding frequencies, ठीक है? A and B are
कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज नहीं, कंपाउंडिंग पीरियड्स। ये मैं एक बार कॉपी मत करना ए एंड बी, मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको बोलूंगा कॉपी करना। सो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हमें अभी अप्लाई करना होता, एक्स ए इज व्हाट यू वांट टू फाइंड वाज सेमी एनुअल, राइट? तो x6 लिख दो आप उसको। सेमी एनुअल रेट आपको निकालना है, x6 लिखा, 1 प्लस आपको क्या दिया, एनुअल रेट, इसको x12 लिखो, इंटू a by b होगा ना। दिस विल गिव यू व्हाट, x6% is equal to 1 plus x12 was this to the power 0.5 minus 1. This was the latest question that we did. Now applying the same formula to the previous questions. Previous question में previous question का अलग कलर से करता हूं मैं। x फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव एनुअल रेट निकालने बोला था ना। इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस इफेक्टिव मंथली रेट में 1 लिखोगे, दिस विल बिकम 12 by 1 minus 1, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन 6% लिखा है ना, ये वाला, ये 6% नहीं है, ये x6 वो है, 6 इज इन द सबस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मतलब x a% है ना, ये a है, हाँ 9 नहीं है। एक नोटेशन जैसा बना लो आप, मतलब दिस इज जस्ट टू मेक योर लाइफ इजियर इन द एग्जाम, वेयर a and b आर नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला के साथ आपको सब में अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आप कॉपी कर लो, इसको आप ऐसे कॉपी करना, x a इज इन द सबस्क्रिप्ट, हाँ, इज इक्वल टू 1 plus x b is in the subscript, a by b minus 1. Now going question wise, x a हाँ परसेंटेज है और x b परसेंटेज भी है, यहाँ दे देना शॉर्टकट टू अबव करके और ये लिख देना, ठीक है। अब सारा सम एक बार फॉर्मूला से भी सॉल्व कर ले रहे हैं एक और बार, जस्ट सो दैट एकदम क्लियर हो जाए कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला, ताकि यू डोंट हैव टू क्रिएट ऑल दीज इक्वेशंस अगेन एंड अगेन। आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड ओवर हियर, x was compounded annually, right? So x12 you need to find, where you have 1 plus x मंथली क्या दिया आपको, 1 to the power 12 by 1 minus 1, ठीक है। अप्लाइंग दिस 1 plus 1%, don't make the mistake of putting 12 here, huh? It is always effective rate, whatever calculation you do always effective rate पे calculate करोगे, to the power 12 minus 1, which will give you the same answer as 12.68%, just that you have done it faster now. Similarly in the next question, quarterly, so x3 is equal to 1 plus what was given, again x1 ही दिया हुआ था ना, x1 was given to the power 3 by 1 minus 1, 1 plus again 1% to the power 3 minus 1, which will give you 1.01 to the power 3 minus 1, which is nothing but again 3.03%. And final question using formula, either you had to find x semi-annual का 6 होगा, ये number of months in compounding period लिख लीजिए आप for the sake of completeness. and b लिखा था ना आपने, a and b are number of months in compounding period,
जहाँ फॉर्मूला लिखवाया था मैंने उधर आपको निकालना है ये x6 निकालना था आपको दिया हुआ था क्या है x12, तो 1 + x12 टू द पावर 6/12, लेफ्ट वाला बाय राइट वाला -1, 1 -1 नीचे ऊपर मत कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 12% to the power half -1, which will again give you 5.83%. ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला से एकदम फटाफट कैसे करना है। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बट ये ट्रिक वैसा ही है, अप्रोक्सीमेशन है, तो ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ बट आप समझ लो। आपने 1% पर एनम से निकाला इफेक्टिव एनुअल रेट 12%, 12.68, तो आप डायरेक्ट 12 इंटू कर देते हैं और उससे थोड़ा ज्यादा ही आता हमेशा ही। तो कभी भी अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो, मतलब मंथली को आप सेमी एनुअल कन्वर्ट कर रहे हो, इफ यू कन्वर्टिंग मंथली टू हाफ ईयरली, सेमी एनुअल और ईयरली, you can directly multiply and the answer will be a little more than the multiplication. This is only true for when you are going from lower compounding to higher compounding. ठीक है, similarly ऐसे आया 3.03, you went from monthly to quarterly or 3 monthly compounding, so into 3 करते तो आपका 3% आता, the answer is just a little above 3%. and जब आप हायर से लोअर में जाते हो then you can divide and the answer will be little less than division. ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. This was yearly to half yearly, so you would have divided it by 2, 12% by 2 would have given you 6%. Answer is a little less than 6. So if the options in your question, in the MCQ question, are far apart from each other, you can use this trick. You won't have to do any calculations. ठीक है, ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप अपना प्रैक्टिस में ये कभी मत यूज करना, प्रैक्टिस आपको फॉर्मूला से ही करना है, बट while answering, while giving your exam, you can use this trick just to be quick. ये सेम सिमिलर ट्रिक है टू इन्फ्लेशन वाला, जिसमें 1 + 2 कर दिए थे 3 लाने के लिए, आंसर वुड हैव बीन अ लिटिल मोर देन 3. ठीक है, क्लियर एवरीवन? we'll stop here today, we'll continue whatever it is, उसके बाद नेक्स्ट क्लास. अभी तक सब क्लियर था? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन ऑनलाइन? एनीवन? एनी क्वेश्चन? आई अज्यूम नो क्वेश्चंस. Yeah, so we'll have next class next weekend. Timing will be communicated to you by Thursday, Friday तक आपको टाइमिंग मिल जाएगा. Again it will be screencast होगा, recording भी होगा, so whatever your schedule is, according to that you can adjust. ठीक है, done. Thank you everyone. I'm closing the meeting.